YouTube family, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. It's me Sadia. If you don't know me, so let me introduce myself. My name is Sadia and I'm making a video about products reviews, skincare, DIYs and makeup videos. And today's video I'm going to unboxing my one more product, and this is a ring light. I purchased this ring light from AliExpress, and so finally it's here, and in this video I'm going to share with you how is it, how it's work. And yeah, let's get to start this video now. In this video I'm going to share with you how is it, how it's work, and what's the price of this ring light. So yeah, let's get to start this video now. If you like this video, so please go ahead and subscribe to my channel, click the like button, don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my videos. And if you're a returning subscriber, so welcome back to my channel, and if you're new here, so welcome to my channel. Let's get started. I have this box, and if you open this box you can see the ring light here. This is a 14-inch ring light, and 14-inch ring light. Okay, it didn't come with a stand, it's only a ring light, and this is a 14-inch ring light. And usually I have this. Okay, if I show you here, this is my second ring light. If you can see here, this is a 10-inch ring light, and this is a 14-inch ring light. This one I purchased AliExpress as well, and the price of this ring light, I think it's $15, $18. It's really cheap, but it's really work very well. But for our videos I want to buy a big ring light which comes with the camera stand, and you can put the camera inside here. So this is a tool, and I'm going to put the tool over here. So this is for a camera. You can put the camera inside on here, and so you can see here, you can twist this and it's come out. So all I have here is a ring light, and here I have a camera stand, and I took this camera stand when I had an iPhone, and the holder is the iPhone holder. So this is a really easy and comfortable for me. And now I'm setting the ring light. So I'm going to show you how I fix this ring light, and I'll tell you how I connected this ring light with this. And here I have this holder, and here I have a stand. I have taken this stand and I'm putting it inside the hole which in the holder of this camera, and we have to turn it around and close it really tight. And look, it's done. So now I am taking this ring light, and I have an iPhone holder which is lower part of it, and we have to tighten the head by twisting it. So it is here and it's ready, and whatever it is I have attached it to it. And now I'm going to attach this as well. So here I'm connecting it to this camera stand. And now I'm sharing with you how much light it has and how little it has. तो यहाँ पे जो है मैंने कर दिया है डाउन हमारी लाइट को, एंड आप देख सकते हैं कि कितनी ये डाउन हुई हुई है, और बिल्कुल भी लाइट इसके ऊपर पड़ नहीं रही है। अब मैं जो हूँ उसको थोड़ा सा हाई बीम करूँगी, थोड़ी सी लाइट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैं आपको ना ये बंद करके दिखाती हूँ। सो विंडोज़ मैंने क्लोज कर दी हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, बैक कैमरे से वीडियो नहीं बना रही हूँ। सो हेयर यू कैन सी हेयर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द मॉडल, यानी कि मैं अब इसका कलर चेंज कर रही हूँ जो कि वाइट के ऊपर होगा। ये देखें, ये है वाइट में, एंड एज यू कैन सी हेयर ये जो है लिटिल बिट पॉपअप हो रहा है, यहाँ पे शाइन सी नज़र आ रही है। लेकिन ये जो है लाइट में आप अगर वीडियो बनाएंगे तो आपके जो मेकअप है या कुछ भी इस तरह का होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आती है। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाली लाइट को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इसको लाइक करते हो कि नहीं। ये है पूरी फुली हाई बीम पे, और ये है, मैं इसको कर दूँ, ये देखें, ये है लो बीम पे। मेरी विंडोज़ जो है वो अभी क्लोज हुई हुई हैं, और ये जो है ये है लो बीम के ऊपर, एंड दिस इज़ अ हाई बीम। तो ये कम्प्लीटली हाई बीम के ऊपर है। और अब मैं एक और चेंज कर रही हूँ जो कि है ये लाइट वाला।
ये है हाई बीम पे और मैं लो बीम पे भी आपको दिखा देती हूँ। सो हेयर काफ़ी ज़्यादा लो हो गया और अब ये बहुत लाइट है, बंद नहीं हुई है लेकिन बहुत लाइट बीम के ऊपर है। एंड नो ये देखें, ये हो गया पूरी हाई बीम के ऊपर एक और। सो मुझे जो है जो पसंद आई है वो ये वाला आया है काफ़ी, जो कि अच्छा सा ये दिख रहा है, इस पर इतना ज़्यादा शार्पिंग लुक भी नहीं आ रहा है और काफ़ी अच्छा मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। So yeah, that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so please give me a big thumbs up, like, share and subscribe to my channel. Don't forget to turn on the notification bell so you don't miss my videos. And इस रिंग लाइट की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड बटन पे चेक कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज।